Ma'am, you are on mute. Now is my voice audible? Yes, ma'am. Okay, thank you. Surbhi ma'am, I would just request you to please switch on your camera so that everyone can see. Is your video visible? Hi guys, am I audible? Hi. For a minute, just a minute. Oh, we are even being talked about.
पूरा भाई हम जेल तक आ गए मौसम Hi guys. Am I audible? Yes, Surbhi, you are audible. Okay. Thank you. I'll just quickly start on with the session. Let me just share my screen. Let me know if it's visible. Is my screen visible to everyone? Yes, it's visible. Okay, perfect. Thank you. So guys, let's start on with the session on mastering quantitative aptitude, unlock your numerical potential. Before we actually start on with the session, I would just like to give a quick introduction about myself. So, my name is Surbhi Gupta. I completed my graduation in economics in 2019, post which I started working with Genpact and then with EY India. I was working in the actuarial team. I'm currently giving actuarial exams. So, my background is basically insurance, risk management, data analytics, and actuarials, of course. So I'm currently done with six of my exams. I was earlier working with life insurance team of actuarial side. Now I have moved on to Dublin, Ireland. I completed my master's here. I have two master's degrees in finance. And now I'm currently working with FFH Management Services, which is a part of the Fairfax Group. I am onto the IFRS 17 actuarial team, which is on the general insurance side now. So I have transitioned my career from life insurance to general insurance. That's a bit about myself. Apart from my job, I am very much interested in sustainability, climate risk, and stuffs. I have been teaching actuarial science for almost 5.5 years now. Almost 5.5 years. I have also worked with the IAQS college in Mumbai. I have delivered lectures for probability and stats over there as well. So that's a bit about myself. Today's session is about quantitative aptitude, how it will help you in your corporate journeys, and we'll brush up a few concepts as well. So, first, let's talk about importance of quantitative aptitude in the corporate world. So, when I talk about quantitative aptitude, currently what I'm not sure if you guys, I think you guys are doing BBA fourth semester. Am I right? Anybody? This is BBA group, right? Yes, ma'am. So when I talk about BBA group, I think you have this subject called quantitative aptitude, all of these techniques that you study. If I give a bit of brief of how they would help you in the corporate world, number one thing, you have a quantitative aptitude test in almost all of the companies that you apply to after completing your graduation, of course.
So of course it will help you in your test. Other than that, if I talk about various parts of the industry where it will help you with, number one is of course finance and accounting. All the logic, all the concepts that you study over here, whether it's data interpretation, whether it's understanding how time distance works, all of those logical concepts that you're going to study, you are going to look all at all of those logics when you work in finance and accounting teams, because there it is not just about creating, financial reports and stuff. It is mainly about understanding those reports. And when it comes to understanding the financial analysis, budgeting, forecasting, all of those graphical analysis, all of those logical reasoning concepts that you are studying right now, they will come into play. Another very big field is data analytics, of course. I'm sure you must have heard about big data analytics. Masters courses are coming up in India. There's a lot of talks on actuarials and artificial intelligence, machine learning, all of those concepts. The very basic core of all of the coding that you do, all of the programs that you make, is the logic that you're learning here. So this quantitative aptitude, these skills will help you in moving and leveraging your career to data analytics as well. And sorry, someone trying to say something. Guys, किसी का mic on है? If you could please mute yourself. Thank you so much. So the next part where this will help you is of course operations management. जो आपके business decisions होते हैं, all of those decisions are based upon the analysis that you do. So all the cost benefit analysis, all of the financial analysis, all of the supply chains, all of the marketing data that comes in, everything is based upon quantitative analysis. Quality, I'm not undermining the quality and the importance of qualitative analysis. I'm just focusing on the importance of quantitative analysis that is going to play a role in your corporate journeys. So all of these skills that you're going to study, all of the and I'm not directly referring to the topics that you're going to study. I'm referring to the logic that they will help you build, and those applications of logical thinking is what is going to help you. So that is the main part of the topic that is helped on into the corporate journeys. I have a few slides of how you can apply the quantitative analysis. So first is of course budgeting and forecasting, as we discussed. So all of the business decisions that are made, they are basically based upon forecasting that you do. Even I am working as an actuarial analyst. My work is to forecast the company's pricing data, reserving data, everything into 50 years from now, into 20 years from now, into 60 years from now. So depending on different scenarios that we are working on, all of these skills will help you build logic while you are working into the forecasting teams. Second is, of course, analyzing data. So all the marketing data that comes in, all the pricing data that comes in, all the trends that you see, all of those trends you apply when you're doing forecasting. So it helps you analyze the data. Another point is monitoring key metrics. So whenever you are working on improvement of a process, there are a lot of KPIs involved in the improvement of the process. So all those KPIs are based upon these logical thinking parameters that we are going to study in this subject. And optimizing operations. Whenever we talk about improvement in terms of, let's say, efficiency or time, any kind of improvement that you're working on, all of those improvements will involve skills that you're going to study over here in the quantitative analysis module that you have in your BBA subject. So that's a bit about it, how you can develop this aptitude. Of course, you have these subjects into your course curriculum. So formal education, pursuing degrees, certifications, etc. Then you have a lot of, when you start working into the job, actually, you have a lot of roles that give access to the on the job training as well. So you have options like that as well. And of course, continuous learning. I truly believe that you should always enroll yourself into various courses, workshops, everything. I have 5 to 6 years of experience now, but still I'm currently doing exams. I'm studying alongside, I'm pursuing another master's, thinking of pursuing another master's.
So all of those things, I always believe that continuous learning will always help you in upskilling yourself. So that's a bit about how the subject will help you into the corporate journeys. Now let's move on to actually brushing up a few of the concepts on quantitative analysis. So there are 3 to 4 topics that we're going to study or discuss in today's session. So number one topic that we're going to look in is simple interest. Can anybody amongst you guys tell me what is the formula for simple interest, maybe? Anyone? Okay. So let's brush up a few concepts on simple interest. Let me just open my notepad. Sorry. Okay. So when I talk about simple interest, आई एम श्योर सबने अपने घर पे ये डायलॉग अपने पेरेंट्स से बहुत बार सुना होगा कि एंड नॉट इवन पेरेंट्स जिसके घर पे ग्रैंड पेरेंट्स हैं आई एम श्योर दे वुड आल्सो से द सेम डायलॉग इंडियन सोसाइटीज में दिस इज वेरी मच रेलेवेंट कि हमारे टाइम पे तो ना 500 रुपए से बहुत सामान आ जाता था आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं आता एंड आई एम नॉट रेफरिंग टू द अमाउंट है मैं 500 रुपए की बात नहीं कर रही इट कुड बी 100 रुपीज 1000 रुपीज वट एवर दे आर सेइंग बट द पॉइंट हेयर इज विद टाइम the value of money is changing. And we usually, when you will enter into your corporate journeys, you will refer to this concept known as time value of money. So what I'm referring here is this word called value of money. Ki how your value of money is changing across years along time. इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव 2 different methods. एक और हम दोनों ही आज डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट ऑन विद बोथ ऑफ देम सो वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड वन इज ऑफ कोर्स योर कंपाउंड इंटरेस्ट ठीक है सो दीज आर द 2 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन विद द सेशन विद अभी मैंने बोला टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करेंगे व्हेन आई टॉक अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने बोला वैल्यू ऑफ मनी टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रही है ठीक है सो इफ आई जस्ट टेक अ सिंपल डायग्राम लेट्स से टाइम 0 ये टाइम लिख रही हूं मैं दिस इज टाइम सो टाइम 0 को मैं करंट टाइम आज का टाइम बोल रही हूँ सो लेट्स से दिस इज द करंट टाइम एंड देयर इज सम टाइम n in future so this is your future time okay now when I say time value of money आज की जो वैल्यू ऑफ मनी है हम उसको यूजुअली वी कॉल इट एज आपने अपने कॉलेज कोर्सेज में देखा होगा यू कॉल इट एज प्रिंसिपल अमाउंट और इन अदर टर्म्स आप अगर बाहर जाके कोर्सेज वगैरह में देखोगे आप लोगों से बात करोगे दे ऑल्सो रेफर इट एज प्रेजेंट वैल्यू which to me makes more sense. Instead of saying the word principal, I refer to it as present value. कि आज present means आज and value means value of money. So what is the value of money that we have today? That is why this makes more sense to me than this word called principal. I know आपके courses में word principal use होता है, but I usually refer to it as present value. Similarly, time n क्या है मेरा? Future time. सो इसको मैं क्या रेफर करूंगी इस टाइम पे जो फ्यूचर में वैल्यू ऑफ मनी होगी वील कॉल इट एज फ्यूचर वैल्यू ओके सो प्रिंसिपल इज द अमाउंट जो आप आज डिपॉजिट करते हो अपने बैंक्स में विच यू हैव टुडे और आपने अपनी बुक्स में कोर्सेज में पढ़ा होगा एक वर्ड कॉल्ड अमाउंट दैट अमाउंट इज नथिंग बट योर फ्यूचर वैल्यू ओके सो you can call it any which ways आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कंफर्टेबल हो यू कैन कॉल इट प्रिंसिपल एंड अमाउंट आप प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के साथ कंफर्टेबल हो यू कैन कॉल इट प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इट्स अप टू यू व्हाट वी आर रेफरिंग हियर इज द कॉन्सेप्ट ओके सो इफ आई टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट
सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है? सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि अगर आप अपने बैंक में एक प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो आज एंड इट ग्रोज एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रही हूँ. लेट्स सपोज आपने 100 रुपीज डिपॉजिट करे. ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द टाइम एज 1. 1 साल की बात कर रहे, ज्यादा टाइम की बात नहीं कर रहे. लेट्स टॉक अबाउट जस्ट 1 year. ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल इफ द बैंक इज पेइंग यू 10% का सिंपल इंटरेस्ट थ्रू आउट 1 year. तो कोई मुझे बता सकता है कि मेरे पास 1 साल बाद कितने पैसे होंगे टोटल? एनीबडी? ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला देन. जब मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है. इट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. एंड क्योंकि रेट आपका परसेंटेज बेसिस में होता है, मैंने यहाँ पे 10% लिखा है, तो हम अपॉन 100 करते हैं. दिस इज द वेरी बेसिक फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, ये जो आपका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट देगा. तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट इन द वैल्यूज बेस्ड अपॉन दिस गिवन एग्जाम्पल, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है गाइस? मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 100. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, सो 10 अपॉन 100 हो जाएगा, इसीलिए नीचे अपॉन 100 है. इनटू व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 1 year, so that comes out as 10. Now if I say to you guys कि आपने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं और आपको 1 साल बाद 10 रुपए मिलेंगे, यू वुड कम एंड से टू मी, मैं पागल हो? दिस इज नॉट मेकिंग सेंस. अगर आपके पैसे बैंक में डालने से डिक्रीज हो रहे हैं, नो वन इज गोइंग टू पुट देयर मनी इनटू द बैंक्स. So this 10 that we have calculated over here is only the interest amount that you have earned in 1 year. अगर आपको टोटल अमाउंट चाहिए, और इफ यू कॉल इट फ्यूचर वैल्यू, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए, दिस फ्यूचर वैल्यू इज गोइंग टू बी द सम. अगर मैं फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट की बात करूं, दैट इज नॉट जस्ट दिस पार्ट जो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है, वो आपका प्रिंसिपल जो आपने डिपॉजिट करा था प्लस इंटरेस्ट होगा. तो आफ्टर 1 year I am not going to say I am getting 10 rupees. I am going to say कि मैंने 100 rupees deposit करे थे and I have earned an interest of 10 rupees on that 100. So the total value in my bank account at time 1 is not 10 guys, it's 110. Am I making sense? Everybody? I'll take that as a yes then. Okay, so this is the very basic concept behind simple interest. Before I move on to compound interest, let's just look at a few questions on simple interest. So we have a few questions. Let's look at this question. What is the question saying? Question says an investment of 1,000 accumulates to 2,500 after 5 years. Calculate the simple annual interest rate. So if I just make a small timeline over here, you deposited 1,000 rupees and you have 2,500 after 5 years. Okay. So what is the amount of interest that you have earned over 5 years? That is 2,500, which is now sitting in your bank account, minus this 1,000 जो आपने deposit करा था. So my interest amount is 2,500 minus 1,000, which is nothing, 1,500. So this is the amount of interest that you have earned over 5 years. Now, what is the formula for the interest that we have calculated right now? My interest is principal into rate
upon 100 of course, क्योंकि percentage basis में होता है, into time. That is coming out as 1500. What is the principal amount, guys? Principal is nothing but the amount that you deposited over here. So that is 1000 into R upon 100, which we have to calculate. We have to calculate the simple annual rate of interest, that becomes your R upon 100. And what is the time? Time is 5 years. So if you put in the formula, what am I getting? This gets cancelled. So my R is nothing but 1500 upon 50, which is nothing but 30. So that's your option. You get your rate of interest as 30%. Any doubts in this question to anybody? किसी को भी? No, ma'am. Okay, simple interest is very simple, guys. Let's look at another question. Let's look at this. I like this question. Let's look at this question. What is this question saying? An investor deposits 5,000 into a savings account that pays 10% simple interest at the end of each year. What I do personally is, guys, जब भी question आता है, I always make a timeline. Okay, so the investor has deposited 5,000 at time 0, and the bank account is paying 10% of simple interest. Compare how much the investor would have after 6 years if the money were, first part is saying straight away invested for 6 years. So we are not looking at anything. This is time 6, and we have to calculate the amount that we have at time 6. Okay, so we know amount is nothing, principal plus interest. And what is my interest? The formula for interest is principal into rate upon 100 into time. Putting in the values, what is the principal? It is 5,000 into what is the rate of interest that I'm getting? 10%. And for how many years am I putting the money? 6 years. We'll calculate this. 0 से 0 cancel कर दो. 500 into 6, 3,000. So you are earning an interest of 3,000 over 6 years. Now, what is going to be the total amount in the bank account? It is not going to be 3,000. अगर 5,000 का 3,000 हो रहा है, आप डालोगे ही नहीं बैंक के अंदर. So my total amount is 5,000 which you deposited plus 3,000 which comes out as 8,000. So for first part, the answer is 8,000. Any questions here, guys? Anybody? No, ma'am. Okay. Now let's look at the second part. This is interesting. What is the question saying? Compare how much the investor would have after 6 years if the money were invested for 3 years, then immediately reinvested for further 3 years. So in this case, the timeline would become a bit different. The question here means, for example, at time 0, I'm depositing 5,000 rupees. Okay, I can calculate the value that I'll get in my bank account at time 3. Can someone please tell me quickly what is going to be the amount in the bank account after 3 years? I'll give you 1 minute. Try to solve it and tell me the value at time 3. बिल्कुल यही सेम फॉर्म है जो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में करा ना. It was for 6 years. You have to do the same thing but for 3 years.
मैम अमाउंट बताना है इसमें हाँ जी 6500 perfect, thank you so much. 6500. Anybody who is having doubts in how we calculated the 6500? किसी को इस पार्ट में डाउट? Nice, good. So question क्या कह रहा है? Question कह रहा है compare how much the investor would have after 6 years if the money were invested for 3 years then immediately reinvested for a further 3 years. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो टाइम 3 पे आपके पास 6500 रुपीज आए हैं, you took it out of the bank and you have reinvested it again into the bank. तो बैंक से निकाले और बैंक में ही वापस डाल दिए. Now why would you do that? You would do it क्योंकि अगर आप ये वाला पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट, इसमें जो हमें 6 years तक इंटरेस्ट मिल रहा था, दैट वाज ऑन दिस 5000 दैट वी डिपॉजिटेड. राइट, एवरी ईयर यू आर गेटिंग द इंटरेस्ट. 10% का जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है दैट इज ऑन दिस 5000 रुपीज दैट वी इन्वेस्टेड. तो अगर मैं 6500 को बैंक से निकाल के वापस बैंक में डाल दूंगी तो उससे क्या होगा? अब नेक्स्ट 3 years तक मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो 5000 पे नहीं मिलेगा, अब वो 6500 पे मिलेगा. So instead of getting 10% of 5000 which is 500 actually, 500 का जो इंटरेस्ट आपको 6 साल तक मिला था, वो इंटरेस्ट अब आपको अगले 3 साल के लिए 6500 पे मिलेगा. What is 10% of 6500 guys? Anybody? 8450. 8450 is the final answer. Yes, ma'am. Right? Perfect. आया कैसे? मैं ये समझा रही थी. ये जो 6500 का अमाउंट आपको मिला है, इस पे 3 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा. कितना का इंटरेस्ट मिलेगा मुझे? 10% का इंटरेस्ट मिलेगा. 10% of 6500 is 650. So for 3 years, from time 3 to time 6, for 3 years, I am getting 650 का interest per annum. तो total interest कितना हो गया? Into 3 कर दो. Which is? 1950. Exactly. You'll add this 1950 का interest into 6500 and you'll get the value as 8450 as you guys told me. So if you look at the answers of first part and second part, क्योंकि आपने reinvestment करी, आपकी जो amount की value है वो increase हो गई. समझ आया है सबको? Yes, ma'am. ठीक है. Let's look at another question. Okay, nice question. क्या कह रहा है? Question कह रहा है a certain amount earns simple interest of 1750 after 5 years. जो जो information guys given है ना, उसको लिखते जाओ साथ साथ. तो मेरे को interest कितना given है? 1750. And what is the value of time that is given to me? That is 7 years. Had the interest been 2% more, अगर मैं interest को R% ले लूं, वो कह रहा है अगर मेरा interest R% plus 2% होता, how much more interest would it have earned? I'm giving you 1 minute. Can you guys tell me the answer? You have 5 options on the screen. One hint that I can give is interest का जो हमने formula पढ़ा है ना, उसको open करो and then try looking at the formula.
आया किसी का आंसर? What is the formula for interest, guys, that we have studied? Principal into rate upon 100 into time. इसकी वैल्यू मुझे 1750 गिवन है, राइट? इन दिस केस मुझे रेट नहीं पता और मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, मुझे सिर्फ टाइम पता है और इंटरेस्ट की वैल्यू पता है. सो क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर मेरी इक्वेशन ये होती प्रिंसिपल इनटू रेट प्लस 2/100 इनटू टाइम, सॉरी, तो मेरा इंटरेस्ट क्या आता? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग मी. प्रॉब्लम इज कि मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट पता ही नहीं है. क्योंकि मुझे प्रिंसिपल भी नहीं पता और रेट भी नहीं पता, आई कैन नॉट एक्चुअली कैलकुलेट कि मेरे को कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा अगर मेरा इंटरेस्ट 2% से इंक्रीज हो जाता. सो एक्चुअली आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. समझ आया मैंने क्या बोला? क्यों? अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होता ना तो हम कैलकुलेट कर लेते, बट क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट ही नहीं पता, वी कैन नॉट डिटरमाइन हाउ मच एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वी वुड गेट इन इफ द इंटरेस्ट वाज 2% मोर. क्लियर है एवरीबडी? ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जल्दी से. What will be the ratio of simple interest earned by certain amount at same rate of interest for 6 years and that for 9 years? ओके, ये हो जाएगा. कह रहा है दोनों ही केसेस में मेरा अमाउंट इज सेम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो सेम. तो व्हाट इज द रेशियो अगर मैं उस अमाउंट को 6 years के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ और 9 years के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ? सो इफ आई इन्वेस्टेड फॉर 6 years लेट्स से, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? P इंटू R/100 इंटू 6. और अगर मैं उसको 9 years के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ तो क्या होगा? P इंटू R/100 इंटू 9. एंड इफ आई वांट टू टेक अ रेशियो, क्या आ गया? 2:3. इजी है गाइस एवरीबडी? Yes, ma'am. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन ऑन सिंपल इंटरेस्ट. क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सेइंग एन इन्वेस्टर डिपॉजिटेड 10,000 in a bank account that pays a simple interest at a rate of 5% per annum. Calculate the accumulated value of the deposit after 3 years. आप इसको एक्चुअली ना ओरली भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है कैलकुलेटर की या टाइमलाइन की. कितना अमाउंट डिपॉजिट करा है मैंने? 10,000. कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे? 5%. 10,000 का 5% कितना होता है गाइस? 500. 500. बिल्कुल सही. ये जो 500 का इंटरेस्ट है मुझे मेरे अकाउंट में 3 साल के लिए मिलेगा. तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,500. एग्जैक्टली. 10,000 डिपॉजिट करा था, 1,500 का इंटरेस्ट आ गया, वैल्यू इज 11,500. क्लियर है सबको? एनीबडी, एनी डाउट्स? Perfect. Cool. Let's move on to another topic for the day. Compound interest. ठीक है. किसी को बाय चांस पता है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का? अमाउंट का फॉर्मूला पता है किसी को? एनीबडी? ओके. अमाउंट का फॉर्मूला इज प्रिंसिपल into 1 plus R/100 raised to the power time. ठीक है. I'll just give a quick illustration कि फॉर्मूला आया कैसे.
100 रुपीज लेट्स से आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक के अंदर और बैंक आपको 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है एवरी ईयर, ठीक है। तो अगर मुझे 1 साल बाद बैंक के अंदर वैल्यू देखनी है, वैल्यू क्या होगी, जो आपने 100 रुपीज डिपॉजिट करे थे वो प्लस जो आप 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करोगे, तो 10 रुपीज का इंटरेस्ट आपने अर्न करा, वैल्यू कम्स आउट एज 110। फर्स्ट ईयर तक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम वैल्यू देते हैं, चेंज फर्स्ट ईयर के बाद आना शुरू होता है दोनों इंटरेस्ट टाइप्स में, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि एवरी ईयर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो इसी अमाउंट पे मिलेगा जो आपने डिपॉजिट करा था टाइम्स 0 पे। तभी जब हम क्वेश्चंस कैलकुलेट कर रहे थे, हमारा जो 10,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट था 5% का, 500 का जो अभी रिसेंट क्वेश्चन करा हमने, वो 500 का इंटरेस्ट वाज कांस्टेंट फॉर ऑल द ईयर्स। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि जो अगले साल आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा ना, वो इस वाली वैल्यू पे मिलेगा। सो एवरी ईयर the interest that is calculated is on the last value that you calculated at previous year. So if I calculate the interest for next year, वो क्या होगा, वो 10% 100 का नहीं होगा, वो 10% किसका होगा, 110 का होगा। What is 10% of 110? It's 11 rupees. So 110 अकाउंट में पड़े, उस पे आपने 11 रुपीज का इंटरेस्ट अर्न कर लिया, सो द वैल्यू गोज अप टू 121 एक्चुअली। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में वैल्यू हमेशा फर्स्ट इनिशियली प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में लास्ट वैल्यू जो आपके अकाउंट में आई होती है उस पे आपका नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट या नेक्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट जो होता है वो कैलकुलेट होके आता है। डज दैट मेक सेंस एवरीबडी? Yes, ma'am. ओके, जल्दी से लेट्स लुक एट अ फ्यू क्वेश्चंस। देयर आर अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स जो मुझे बताने होंगे, वो क्वेश्चंस के साथ साथ ही देखेंगे, ठीक है। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000 आफ्टर 3 years एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, फॉर्मूला इज प्रिंसिपल into 1 plus r upon 100 raised to the power time. Putting in the values, 25,000 is my principal amount. Rate of interest is 12%. And what is the time? Time is 3 years. Calculate करो, बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। What is the answer, guys? Ma'am, it's 35,123.2, but it's none of these. दोबारा से कैलकुलेट करो। क्या बोला आपने आंसर, सॉरी मुझे आवाज क्लियरली नहीं आई। 35,000 123.2. दैट इज द आंसर। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट वेरीफाई जल्दी से। करेक्ट। सो आंसर इज नन ऑफ दीज। आया सबका आंसर? एनीबडी, एनी डाउट्स? किसी को भी? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फिर। एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम will a sum of 1200 become 1348.32 in 2 years? तो मेरे को क्या गिवन है कि प्रिंसिपल अमाउंट इज 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है तो मैं उसको r upon 100 ले रही हूँ, टाइम इज 2 years एंड what I am getting finally is 1348.32.
यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे आर की वैल्यू चाहिए। तो आर क्या हो जाएगा मेरा, आर अपॉन 100 लेट से, दैट इज सबसे पहले 1200 को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, सो 1348.32 अपॉन 1200, ठीक है। फिर पावर शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और फिर ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेट करना वैल्यू क्या आ रही है, आया किसी का आंसर? 6% मैम। 6%, बिल्कुल सही, ठीक है। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। Okay. Albert invested an amount of 80,000 in a fixed deposit scheme for 2 years at compound interest rate of 5% per annum. How much amount will Albert get on maturity of the fixed deposit? So again, this is my principal amount. This is my time. This is my rate. So putting in the formula क्या है? P into 1 plus R upon 100 raised to the power T. What is P? 8,000. What is R upon 100? 5%. So 5 upon 100 हो गया. And what is by time? 2 years. चेक करो क्या आ रहा है आंसर. $8,220. 8,800. 8820, right? Everybody. So that's my option C. Yes मैम। आगे चल रहे हैं, ठीक है. अब ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में करा था, ठीक है. An investor deposits 5,000, बस सिंपल की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. So an investor deposits 5,000 into a savings account that pays 10% compound interest at the end of each year. Compare how much the investor would have after 6 years if the money were invested for 6 years. तो 6 years के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, by formula is P into 1 plus R upon 100 raised to the power T, which is 5,000, 1 plus 10 upon 100 raised to the power 6. What is the answer? एट एट फाइव एट आ रहा है. Yes, ma'am. ठीक है, कुछ डेसिमल वैल्यूज में आ रहा है बट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपकी 8858 होगी. ठीक है. Now question is saying compare how much the investor would have after 6 years if the money were invested for 3 years then immediately reinvested for further 3 years.
तो सबसे पहले टाइम 3 पे वैल्यू निकाल लो। तो टाइम 3 पे अगर मैं वैल्यू निकालूंगी दैट इज गोइंग टू बी 5000, 3 साल के लिए देख रहे हैं, तो 1 + 10 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा। क्या आ रहा है ये चेक करो। सिक्स 655 आ रहा है सबका आंसर। ओके ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना। आई सेंड ऑन दी स्लाइड्स टू यू गाइस सो यू कैन कैलकुलेट इट बाद में। सो बिकॉज टाइम कम है हमारे पास, तो 6655 इज द आंसर। ये अमाउंट आपने टाइम 3 पे बैंक से निकाला एंड वापस बैंक में डाल दिया। सो फॉर द नेक्स्ट 3 years अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, अमाउंट कैलकुलेट करना, व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला? इट इज 6655 into 1 + 10% रेज टू द पावर अगेन 3, क्योंकि टाइम 3 से 6 तक देख रहे हैं। And if you calculate this, you will see your answer is same as above. It is going to be 8858. क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलरेडी आपको जो इंटरेस्ट है वो लास्ट वैल्यू पे मिल रहा है। तो अगर आप री इन्वेस्ट कर भी रहे हो ना, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। अगर आप इस इक्वेशन को वापस से खोलोगे, मैथमेटिकली भी देखोगे, 6655 आया कैसे है मेरे पास? इस इक्वेशन से आया है। सो 5000 इंटू 1 + 10 अपॉन 100 की पावर 3, और फिर अगर मैं ये वाला फैक्टर दोबारा लिख दूं 1 + 10 अपॉन 100 की पावर 3, so this is nothing but 5000 into 1 + 10 upon 100 की पावर 6, which is same as this part. तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर री इन्वेस्टमेंट करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा एक्स्ट्रा। इट इज गोइंग टू बी द सेम वैल्यू इन बोथ द केसेस, बिकॉज ऑलरेडी वो चीज कर रहा है। तो अगर आपने री इन्वेस्ट करा भी, इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एडेड एडवांटेज। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, ma'am. ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सेइंग एन इन्वेस्टर मस्ट मेक अ पेमेंट ऑफ 5000 in 5 years time. The investor wishes to make a provision for this payment by investing a single sum now in a deposit account that pays 10% per annum compound interest. Calculate the initial investment required to meet the payment of 5000 in 5 years time. बहुत प्रैक्टिकल है ये एग्जाम्पल, आई एम श्योर सबके घर में होता होगा। ठीक है, स्पेशली इंडियन फैमिलीज का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, दे आर लाइक 5 साल बाद 10 साल बाद बच्चों की शादी करनी है, बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, तो उसके लिए पैसे जोड़ने हैं, तो आज से ही हम बैंक में कुछ पैसे डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल टिपिकल सेम एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है मुझे 5 साल के बाद 5000 चाहिए। सॉरी, दिस इज टाइम 0, दिस इज टाइम 5। तो मुझे टाइम 5 पे 5000 रुपीज चाहिए। तो मैं आज बैंक अकाउंट में कितने डालूं जो 10% पे ग्रो होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, कि मेरे को 5 साल बाद 5000 मिल जाए। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रिंसिपल निकाल दो। फर्स्ट थिंग्स गाइस, क्वेश्चन समझ आया सबको? एनी डाउट्स इन द क्वेश्चन? ओके, तो क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने अमाउंट का? अमाउंट इज P into 1 + R upon 100 raised to the power T. यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए। सो व्हाट इज माय प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज नथिंग बट अमाउंट अपॉन
1 + R/100 की पार्टी, तो वो क्या हो जाएगा? अमाउंट कितना है मेरा? 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा? 10%। टाइम कितना है? 5 years। कैलकुलेट करना, क्या आंसर आ रहा है? $3104.61। आया सबका? ओके, सो दैट्स योर आंसर। देर आर दो टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे हम लोग, विच इज प्रोबेबिलिटी एंड एवरेज। ठीक है, सो लेट्स मूव अ बिट असाइड फ्रॉम इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। हम चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशंस टॉपिक्स, विच इज प्रोबेबिलिटी एंड एवरेजेस। So if I talk about first thing, probability की अगर मैं बात करूं, arise कहाँ से हुई है? It has arised from a concept called random variables. Random variables word से आपका दोनों चीजें, probability भी और average भी, दोनों आपकी यहां से आती हैं। कोई मुझे बताएगा random word का मतलब क्या होता है? इंग्लिश मतलब पूछ रही हूँ मैं, कोई पढ़ाई वाला मतलब कुछ नहीं पूछ रही। नॉर्मल अगर आपसे कोई पूछे कि रैंडम का मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एनीबडी? आई एम श्योर रैंडम का मतलब पता होगा, राइट? Unordered. अनऑर्डर्ड, थैंक यू सो मच, वेरी एप्ट वर्ड, अनऑर्डर्ड, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, नो ऑर्डर। वेरी गुड, आई लाइक द आंसर, परफेक्ट। अच्छा, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? Anything which keeps on changing is called a variable. Thank you. Anything which keeps on changing, which keeps on taking multiple values is called a variable. तो ऐसी कोई भी चीज जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, मोर देन वन वैल्यू या मोर देन वन आउटकम, इज कॉल्ड अ वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो जाता है? अगर ये दो वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं, रैंडम वेरिएबल इज समथिंग विच कैन टेक मोर देन वन वैल्यू, विच हैज मोर देन वन आउटकम, लेकिन उसका कोई ऑर्डर नहीं है, आने का कोई ऑर्डर नहीं है। आपने घर पे लूडो खेलिए, डाइस देखा होगा। When you talk about dice, there are 6 different values that you can get, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और आने का कोई ऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है। 1 के बाद 3 आ सकता है, फिर 5 आ सकता है, फिर वापस 1 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी। देयर इज नो ऑर्डर टू द आउटकम्स दैट यू गेट। तो डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम वेरिएबल। ऐसे ही लेट्स सपोज मैं कॉइन की बात कर रही हूँ। व्हेन यू टॉस अ कॉइन, there are two outcomes that you can get, either heads or tails. So there are multiple outcomes and again there is no order. ऐसा नहीं कि पहले heads आएगा फिर tails आएगा, कुछ भी आ सकता है। So again, tossing a coin is an example of a random variable. एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूं, आई एम श्योर आप लोग ये चीज देखते होगे, स्टॉक मार्केट के बारे में देखा होगा। तो
मुझे नहीं पता अभी करंट वैल्यू, ऑनेस्टली आई एम नॉट ट्रैकिंग इट फ्रॉम सम टाइम, सो आई डोंट नो, बट लेट्स से देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एक्स, उसका स्टॉक प्राइस था अभी पहले लेट्स से 350.8, फिर चला गया 352, फिर चला गया 343, फिर चला गया 355.6 कुछ भी। So, मुझे नहीं पता कि 355.6 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। तो अगेन दिस स्टॉक प्राइस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एनीथिंग विच हैज नो ऑर्डर एंड हैज मल्टीपल आउटकम्स। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर जो आप कॉर्पोरेट जर्नीज में काम करोगे, ये चीज हर जगह आएगी। हम सबकी जॉब्स बनी ही इसलिए हुई है क्योंकि देयर इज अ थिंग इन द वर्ल्ड कॉल्ड रैंडम वेरिएबल्स। लाइफ के अंदर कुछ भी रैंडम, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो भी आप जॉब के अंदर काम कर रहे हो, चाहे आप मार्केटिंग फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे आप सेल्स में काम कर रहे हो, चाहे आप प्रिडिक्शंस में काम कर रहे हो, कहीं पे भी वो सारी चीजें क्यों हो रही? क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि फ्यूचर इज रैंडम, वी आर वर्किंग ऑन आवर जॉब्स, सो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी हेविली यूज्ड इन योर जॉब। ठीक है, अब वेन एवर देयर इज समथिंग कॉल्ड रैंडम, हम सबसे पहले उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं। कोई मुझे बताएगा प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल बेसिक। Favorable outcomes upon total outcomes. That is your basic formula for probability. अगर मैं कह रही हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डाइस थ्रो करने पे 2 आएगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल कितना आउटकम्स है मेरे पास? 6, 2 इज वन ऑफ देम, तो 1, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6। ऐसे कॉइन टॉस कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हेड्स आएगा? कितने टोटल आउटकम्स हैं? 2, उसमें से एक आउटकम के बारे में पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1/2। So the very basic formula for probability is favorable outcomes upon total outcomes. आप क्योंकि ये रेशियो है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, दैट कैन लाई बिटवीन 0 and 1। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आ सकती, 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कभी नहीं आ सकती। ठीक है, सो योर प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है, हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट है, कभी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट, कभी नहीं हो सकता, ईस्ट से ही राइज करेगा। So that is an example of impossible event. 1, इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, ये तो पक्का पक्का होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सनराइजिंग फ्रॉम ईस्ट इज अ श्योर इवेंट, 100% प्रोबेबिलिटी है उसकी। सो योर प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज क्या होना चाहिए फिर? वन होना चाहिए ना। अगर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1, 100% मैक्सिमम। 1 इज नथिंग बट 100%। तो अगर आप सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे, आंसर शुड बी 1। अगर मैं डाइस के ये 6 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी, एवरी आउटकम इज की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, राइट? सब में अगर सबको ऐड कर दूं, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 6 टाइम्स, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही कॉइन के 2 आउटकम्स हैं, हेड्स एंड टेल्स, ईच हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, दोनों को ऐड करोगे, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1। Am I making sense, guys? Everybody? Okay. ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं हम। सेट थ्योरी देखा है आप लोगों ने कभी? किसी को सेट थ्योरी पता है? ऐसे करके एक बॉक्स बनाते हैं,
यहाँ पे ऊपर एस लिखते हैं, फिर यहाँ पे बीच में 2 सर्कल्स बनाते हैं। देखा है कभी ये? ओके, इसको बेसिकली सेट थ्योरी कहते हैं। तो इट इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर डेटा। ठीक है, सो एस इज नथिंग बट योर टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द इवेंट। इस ए और बी को हम बोलते हैं दीज आर इवेंट्स। सो ए एंड बी आर कॉल्ड इवेंट्स। ठीक है, तो लेट्स से डाइस वाले एग्जांपल ले रहे, तो टोटल सैंपल स्पेस ऑफ डाइस इज 1 2 3 4 5 6। दीज आर द टोटल आउटकम्स दैट आई कैन गेट। ठीक है, दो इवेंट्स डिफाइन कर रही हूँ। लेट्स से ए इज कि आई गेट एन इवन नंबर, and let's say event B is, for example, I'm getting a number which is less than 3. तो event A के क्या क्या outcomes हो गए? 2 4 6, और इसके क्या हो गए? 1 2 and 3। इसको let's say less than equal to 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो event A has 3 inputs and event B has again 3 outcomes। ओके, नाउ ये जो दोनों का कॉमन रीजन होता है, जो मैंने अभी शेड करा है, ये जो कॉमन रीजन है इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। सो ए लिखने का तरीका इज ए इंटरसेक्शन बी। ये जो इन्वर्टेड यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वी कॉल इट एज ए एंड बी। तो कहीं पे भी वर्ड एंड आता है उसका क्या मतलब है? इंटरसेक्शन की बात हो रही है। यही अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं, लेट्स से लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर अ मिनट। ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड करा है, दिस इज ए यूनियन बी। तो ये यू का मतलब क्या होता है? यूनियन। कि मैं ए भी ले रही हूँ पूरा, बी भी ले रही हूँ पूरा, दैट इज ए यूनियन बी। ठीक है, इंग्लिश टर्म्स में भी कॉल इट एज ए और बी। तो और अगर वर्ड आ रहा है मतलब यूनियन को रेफर कर रहा है, एंड अगर वर्ड आ रहा है इंटरसेक्शन को रेफर कर रहा है। ठीक है, एंड द वेरी बेसिक फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर मुझे चाहिए, वो क्या होगा? और आप ये प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में भी ले सकते हो और एन की टर्म्स में भी ले सकते हो, डिस्कस करेंगे वो चीज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट? मैंने पूरा ए वाला सर्कल ले लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर मैंने पूरा बी वाला सर्कल ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हुआ क्या? जब मैंने ए और बी को ऐड करा तो ये जो कॉमन रीजन है ये 2 बार ऐड हो गया, तो मैं उसको एक बार माइनस कर दूंगी। वहां से ये फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, और सेम फॉर्मूला आप एन की टर्म्स में भी लिख सकते हो। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यू कैन ऑल्सो डू इट दिस वेज। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अराउंड प्रोबेबिलिटी। कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी हमसे हो रहे हैं या नहीं। अच्छा, कार्ड्स का कॉन्सेप्ट पता है किसी को? आई एम श्योर सबके घर में पत्ते जरूर खेलते हैं, दिवाली पे तो खेलते ही होंगे। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? एनीबडी? मैम 52। गुड। कितने कलर्स के होते हैं? 2 ब्लैक एंड रेड। कौन से? ब्लैक एंड रेड। और इक्वल नंबर होता है, सो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। दिए फर्दर 4 सूट्स में डिवाइड होते हैं। किसी को सूट्स के नेम्स पता है? कितने 4 सूट्स होते हैं? इट वुड बी अ शॉक अगर ये नहीं पता तो। सबके घर में पत्ते खेलते हैं यार, इंडिया में तो बहुत खेलते हैं। एनीबडी?
Okay. So you have black color ke there are two suits, which is club and spade. Red में there are two, which is diamond and heart. और हर एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं. ठीक है. ये 13 कार्ड्स कैसे डिवाइड है? एक आपका होता है एस कार्ड, देन 2 to 10 नंबर कार्ड्स होते हैं, एंड देन यू हैव 3 फेस कार्ड्स, जैक, क्वीन एंड किंग. इनको हम फेस कार्ड्स बोलते हैं. And this structure of 13 cards is same in all 4 suits. So this is your structure of cards. बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चन आते हुए in your interview कि probabilities बता दो related to cards. बहुत बार आता है, बहुत बार. ठीक है. So this is the basic structure. Let's look at a few questions now. क्या कह रहे question? Question is saying a card is drawn from a pack of 52 cards. The probability of getting a queen of club or a king of heart is, क्या probability है? मैम 2/20 नहीं, 2/13. 2/13 कैसे कैलकुलेट करा बताओगे? And मैम इसमें 1/13 प्लस 1/13 आएगा. 1/13 प्लस 1/13 कैसे आया? मैम क्योंकि क्वीन ऑफ क्लब का हो गया कि 1/13. क्वीन ऑफ क्लब इज 1/13 या 1/52? 1/52. मैं एक सूट की नंबर ऑफ कार्ड्स की बात नहीं कर रही. समझ आया? क्वीन ऑफ क्लब Yes. इज 1/52 एंड किंग ऑफ हार्ट इज अगेन 1/52. आंसर क्या हो गया? 2/52, which is nothing but 1/26. क्लियर है एवरीबडी? ठीक है. कीपिंग इन माइंड गाइस टाइम just 10-15 minutes for second question देख रहे हैं. In a group of 25 people, 18 have a mortgage, 13 own some shares, and 2 people have neither a mortgage nor any shares. How many people have both? अगर आप जल्दी से एक स्मॉल सेट थ्योरी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग देखें, टोटल कितने लोग हैं मेरे पास? 25. उसमें से मॉर्टगेज कितनों के पास है? 18. और शेयर्स कितनों के पास है? 13. 2 लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पीपल हैव बोथ. मुझे ये वाला रीजन चाहिए. अगर 25 में से देयर आर 2 पीपल जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो मॉर्टगेज और शेयर्स की क्या नंबर होगा? 23. देयर आर 23 पीपल जिनके पास या तो मॉर्टगेज होगा या शेयर होगा. ये चीज समझ आई सबको? ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कॉमन कितने हैं यहाँ पे. ये वाला रीजन कितना है? तो ये वाला रीजन क्या होगा? 18 + 13 इज 31. 31 में से 23 माइनस कर दो. आंसर क्या आ गया? 8. आंसर क्या है? 8. इजी है एवरीबडी? इट्स द सेम फॉर्मूला जो हमने करा है. n of m union s is 23, which is n of m plus n of s minus n of m intersection s. तो ये क्या हो गया? 18 + 13 minus n of m intersection s. So this comes out to be as 8. Next question देख रहे हैं. One card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a face card? Jack, Queen और King. क्या probability होगी? जल्दी से.
टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। और जैक क्वीन और किंग कितने होंगे? 3 कार्ड्स की बात कर रहे हैं और 4 सूट्स हैं, तो आंसर क्या है? 12/52 विच इज नथिंग बट 3/13। नेक्स्ट देख रहे हैं। A bag contains 6 black and 8 white balls. One ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is white? कितनी white balls है मेरे पास? 8. Total कितनी है? 6 plus 8 which is 14. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 8/14। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन टुडे गाइस। In a group of students, 60% have passed economics exam, 45% have passed business studies exam, and 25% have passed both. What percentage of students have passed neither? Total percentage क्या होगी? 100%। ठीक है, उसमें से 25% ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पास करे हैं। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका एक भी एग्जाम पास नहीं हुआ? ठीक है, सो जल्दी से एक डायग्राम बनाते हैं। टोटल इज 100%। ये लेट्स से इकोनॉमिक्स एग्जाम है, ये लेट्स से बिजनेस स्टडीज एग्जाम है। दोनों कितने के क्लियर है? 25% के। इकोनॉमिक्स टोटल कितना है? 60%। तो अगर ये वाला रीजन इज 25, तो ये कितना बच गया मेरा? 35। सिमिलरली बिजनेस स्टडीज टोटल कितना है? 45, उसमें से 25 ये वाला रीजन है, तो ये कितना हो गया? 20। मुझे क्या चाहिए? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड नीदर। तो 100 में से इनको माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा? 20%। ठीक है, so that's it guys. I hope you liked the session. Any questions? If you guys have any closing questions, we can take that up. Otherwise, we'll close the session over here. Anything that you guys want to ask? No, ma'am. ठीक है, cool. Thank you so much guys. Have a very nice day. Thank you, ma'am. Most welcome. Thank you, ma'am. Most welcome.